Hello everyone, welcome back to BIOTECHWALI. In last videos we already discussed about Monod equation. Monod proposed that specific growth rate is directly proportional to substrate concentration. But what if that substrate concentration is low? Or what if that substrate concentration is high? We will learn all that in this video. We will learn what is the effect of substrate concentration on specific growth rate. What is a substrate? Comment down. Oh, I will tell you. Substrate is a molecule, or you can say raw material, which interacts with other molecules, or you can say here microbes. Substrate is a molecule which will interact with microbes to make प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वही सबस्ट्रेट माइक्रोब्स के साथ मिलके एंजाइमेटिक रिएक्शन करके हमको देंगे। बट देखते हैं इस वीडियो में कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन से क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पर। सो in last video we discussed what is monod equation and we learned that specific growth rate is directly proportional to substrate concentration. But in this video, we will learn what is substrate and how does substrate concentration affect the growth rate. Monod equation, you can see on the screen, monod equation mu equals to mu max S by Ks plus S, where you know all the variables given here. Mu equals to specific growth rate. Mu max is maximum specific growth rate. S is substrate concentration, which we are going to discuss in this video. Ks is half saturation constant and S again is substrate concentration. We will say limited substrate, not only substrate. This is the substrate which limits the growth. Monod gave that only one substrate can limit microbial growth. Okay. Next देखते हैं what is substrate. Substrate is a molecule or a raw material. A substrate is a molecule that undergoes a change when it interacts with microbes or bacteria. Substrate interacts with microbe, then enzymatic reactions occur. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैक्टोज है, लैक्टोबैसिलस है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, वी आर हैविंग ग्लूकोज प्लस लैक्टोज. But glucose is favorite food of lactobacillus. Firstly, it will consume glucose and it will convert into lactic acid. Later, microbes will consume galactose and will convert into another product that is substrate. How substrate is getting converted into product. During the growth phase or lag or exponential or balance phase, monod equation is applicable only during balance phase. And decline phase, a specific growth rate depends on concentration of substrate. Does it really? Let's check. One dominant substrate, either it is glucose, either it is lactose, either it is galactose. Not only substrate, growth limiting substrate. Let's check the effect of substrate concentration at different levels. What? What if substrate concentration is high? Initially, when medium is enriched, when medium is enriched with high nutrients, substrate concentration is high. Then we will study substrate concentration, we will compare it with Ks. If substrate concentration is too much high than Ks, then if substrate concentration is too much high than Ks, we will neglect Ks. Here substrate concentration is too much high, we will neglect Ks. Neglecting Ks as substrate concentration is very high. Then you can see changes in the monod equation. We are neglecting here Ks. Ks is that जिससे हम कंपेयर करके अभी तक पढ़ रहे हैं यहाँ पर.
जो कि हाफ सेचुरेशन कांस्टेंट है, हमने उसको क्या कर दिया है, नेग्लेजिबल मान लिया है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से नलीफाई हो गए हैं। और नलीफाई होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स आ जा रहा है। बैलेंस ग्रोथ फेज में म्यू कांस्टेंट है, म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स हमारे पास आ जा रहा है। और ये हमें शो कर रहा है कि हमारी तो सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है उस पर ग्रोथ डिपेंड ही नहीं कर रही है, म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स हमारा सब कुछ यूज होने के बाद आ जा रहा है। This is contradiction. This is contradiction. This shows specific growth rate is constant during growth phase and not depending on substrate. Next देखते हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ में you can see hyperbolic curve है. Wait a minute. You can see complete graph. X एक्सिस हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Y एक्सिस हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा कर्व कैसा है, हाइपरबोलिक, और म्यू मैक्स आप देख पा रहे हैं हाई कंसंट्रेशन पर। नेक्स्ट है एट हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब हमारे पास कंसंट्रेशन हाफ होगी तब क्या होगा, व्हेन द ग्रोथ रीचेस द हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देन S becomes equals to Ks. S becomes equals to Kx. Now putting this value in Monod equation, after putting this value in Monod equation, we can see here uh, S Ks, we are replacing Ks by S, so we can get mu max S by 2S. S is nullify, we will nullify S by S, then we will get mu max by 2. Mu equals to mu max by 2. This proves a specific growth rate does not depend on substrate concentration. Again, this proves specific growth rate does not depend on substrate concentration. This is the graph of half saturation constant. यहाँ पर म्यू मैक्स हाफ हो जा रहा है, यहाँ पर म्यू मैक्स है, ये के एस है। नाउ हमने देखा कि वहां पर उन दोनों केसेस में हम सबस्ट्रेट तो यूज कर ले रहे हैं, पर हमारा सबस्ट्रेट का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब लो कंसंट्रेशन पर व्हेन सबस्ट्रेट इज अबाउट टू डिप्लीट और ग्रोथ इज एंटरिंग इनटू स्टेशनरी फेज, देन हमारा सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत कम बचा है, अबाउट टू डिप्लीट, यानी के एस से हम कंपेयर करके पढ़ रहे थे अभी तक, के एस से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो जब हम ये वैल्यू भी फिर जब हम एस को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करेंगे, जब हम एस को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी म्यू मैक्स एस बाई के एस। बट हम लो कंसंट्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास के एस कहाँ से आ रहा है, के एस को हम लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर हमारी मोनोड इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती। Unable to neglect Ks in monod equation, which is half saturation constant, is still half involved. That's why monod equation is not applicable for low substrate concentration. और यानी हमारे मेन रीज़न ये है कि हमारी लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर अनबैलेंस ग्रोथ है, और मोनोड ने तो माना ही बैलेंस ग्रोथ है। तो हाफ कंसंट्रेशन पर और हाई कंसंट्रेशन पर तो हमारी मोनोड इक्वेशन एप्लीकेबल है, बट लो कंसंट्रेशन पर एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ेंगे मोनोड इक्वेशन। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।